दोस्तों, so today we are starting for the practice set 7.1 question number 2. First one, limit x tends to 7 and close open it bracket 3 under root of x minus 3 under root of 7 close the bracket. Now open bracket 3 under root of x plus 3 under root of 7 and upon x minus 7 and close the bracket. So first one, how to solve, let's see. Now so limit x tends to 7 and now close the bracket. Now use that questions and is equal to first one. Now is equal to limit x tends to 7, so x raised to 1 upon 3 and minus 7 x raised to 1 upon 3, right? And second one, x raised to 1 upon 3 plus 7 x raised to 7 raised to 1 upon 3 and upon x minus 7. अपने ये फॉर्मूले देखे होंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी. व्हाट इज द फॉर्मूला? सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. लिमिट x टेंस टू 7 एंड नाउ a रेज टू 2. a रेज टू 2 इट मीन्स x रेज टू 2 अपॉन 3 देन माइनस b 7 2 अपॉन 3 देन अपॉन x माइनस 7. सो सेकेंड वन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो a रेज टू लिमिट, फर्स्ट वन लिमिट x टेंस टू a देन x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a. व्हाट इज द फॉर्मूला? n a रेज टू n माइनस 1. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. सो फर्स्ट वन n 2 अपॉन 3 गेट मल्टीप्लाई 7 and raised to 2 upon 3 minus 1, right? Then is equal to, so is equal to 2 upon 3 and now multiply 7. so 2 upon 3 minus 1 क्या आएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. so 2 then 3 and upon 3 is equal to minus 1 upon 3. so 7 raised to minus 1 upon 3, right? So minus 1 upon 3 is there. So 2 upon 3 then is equal to a raised to minus 1 is equal to 1 upon a raised to 1. ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. सो मल्टीप्लाई 1 upon 7 raised to 1 upon 3. Now 2 upon 3 multiply 1 upon 3 under root of 7. Then so numerator get multiply numerator, 2 ones are 2 then upon 3 under root of 7. This is now final answer. So write limit x tends to 7 and now 3 under root of x minus 3 under root of 7 then 3 under root of x plus 3 under root of 7 and upon x minus 7 close the bracket is equal to 2 upon 3 under root of 7. So this is now your final answer. इजी है. अगर आप इजली मेथड से करेंगे तो आप इजली समझ सकते हैं. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा. जय हिंद दोस्तों. सो इसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. जय हिंद दोस्तों.